Gilgit-Baltistan is a fairyland of mountains, pastures, streams, rivers, giant plains, and the region is so magical that one even finds it difficult to describe its beauty with mere words. Karakoram Highway, the new name of the old Silk Route, not only carries the sagas of the ancient past, but also a meeting point of three world-famous mountain ranges, like the Karakoram, Hindu Kush, and the Himalayas. Gilgit-Baltistan was a high alpine mountain ecosystem with unique biodiversity, rugged mountain slopes, mountain glaciers, streams and lakes, and forests and pastures that supports the life and livelihood of communities living in the valley bottoms on alluvial fans. This fragile environment of the region is susceptible to the impacts of climate change and other anthropogenic pressures. This includes the tourist influx in last 3 years, supplemented by the haphazard tourist infrastructure at popular tourist destinations. This unplanned, unregulated, and haphazard construction of hotels and other tourist infrastructure at higher elevations of ecological importance have faded the natural landscape, destabilized the mountain slopes, habitat fragmentation of wildlife, and deteriorated the freshwater resources. The situation is further aggravated by the trash scattered by tourists at such area. हुंजा इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसमें हम समझते हैं कि हमारे पास हर साल ऑलमोस्ट 5 लाख से लेके 8 लाख के टूरिस्ट आते हैं, जिसमें फॉरेन नेशनल एंड फॉरेन टूरिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं. तो वंस दी लीव दिस प्लेस तो वो बहुत ज़्यादा इसके इम्प्रिंट्स होते हैं, और एंड दैट हैज़ अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड स्पेशली दी पॉलीथीन बैग्स का ये कॉन्सेप्ट वहाँ से हमने देखा. इन बैग्स का बहुत ज़्यादा डंपिंग यहाँ पर मौजूद थी. 2019 के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुंजा ने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताउन से एक कैंपेन का इनेकाद किया जिसका नाम प्लास्टिक बैग फ्री हुंजा था. इस अवेयरनेस कैंपेन का मकसद ये था कि लोगों को और साथ साथ जो टूरिस्ट हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिलियन से 1 मिलियन टूरिस्ट हर साल हुंजा को विज़िट करते हैं, उनको भी ये बताया जा सके कि प्लास्टिक के हुंजा जो है वो एक प्लास्टिक बैग फ्री डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए. बंद करो, बंद करो, प्लास्टिक बंद करो. ताज़ीराती पाकिस्तान की दफ़ा 144 के तहत ज़िला हुंजा में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर बाकायदा पाबंदी का ऐलान करता हूँ. पाकिस्तान का जीवल है जिसको हमने साफ़ सुथरा रखना है और इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाए रखना है. प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल, इसको खरीदना बेचना हुंजा डिस्ट्रिक्ट की हदूद में बैन होगा. प्लास्टिक फ्री हुंजा का भी हमने इनिशिएटिव ले लिया है अंडर द एम्बेट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ये तहैया किया कि ये बैग है जो कि कपड़े का यहाँ का लोकल बना हुआ बैग है, इसको ये इस्तेमाल करेंगे and they will say no to plastic bags. As the sole tourism product of the region is the natural environment that offers a range of activities, including adventure tourism and leisure travels. There is dire need of paradigm shift of just tourism to ecotourism, addressing all essential components of the sector. Past 20 years में when there was no municipal committee जो government level पे operate कर रही थी, Karo came up as they took an initiative using its own resources where they managed, collected all the waste from all across Hunza और फिर वो उसको landfill करते थे. In 2015, luckily government came with their own municipal committee, so we handed over the operations to the government. Gilgit-Baltistan Environmental Protection Agency, in collaboration with the District Administration Hunza, launched a campaign in 2019, Say No to Plastic Bags in District Hunza. हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के हवाले से, फ्लोरा और फाना की प्रोटेक्शन के हवाले से उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन जारी की. उसके बाद एक मुतबादिल कपड़े के बैग दिए गए जो तकरीबन हुंजा के हर घर के अंदर, हर दुकानदार, हर होटल तक पहुंचाए गए हैं.
لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا, کمیونٹی نے اس کو اپریشیٹ کیا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں پلاسٹک بیگ کو لے کے. اس سے صرف نہ کہ صرف ہیومن لوگ سفر کر رہے ہیں, لینڈ پولوشن ہو رہے ہے, بلکہ ہماری جو میرین لائف ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے. This fragile ecosystem is vulnerable to very minute changes in the form of pollution by any anthropogenic activity that may consequently result into drastic changes in other compartments of our ecosystem. The glaciers of Gilgit-Baltistan provide water to the downstream communities upon which the hydropower and food security of the country depends. It is very necessary to save this precious environment to ensure the future of our generations. Plastic shopping bags have very little service life, just from the shop to home. After its disposal in open, it starts to degrade the various important environmental compartments. During its degradation, which is very slow, usually takes more than 500 years in natural conditions, it impacts the soil fertility, pollutes water, severely impacts the health of livestock if taken orally, and pollutes air in case of its burning. بیسیکلی تو یہ جو آئیڈیا جنریٹ ہوا تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی لیجسلیشنز اس کے اوپر لاز پہلے سے موجود تھے, لیکن وہ پارشلی امپلیمنٹ ہو رہے تھے, ٹوٹلی کہیں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے تھے. تو اس کے بعد جی بی گورنمنٹ نے جو جی بی انوائرمنٹ پروٹیکشن کونسل ہے جس کو چیف منسٹر چیئر کرتا ہے, اس کونسل نے یہ ڈیسیجن دیا کہ جی بی کو پلاسٹک پولیوشن سے فری کیا جائے. پائلٹ کرنے سے پہلے, اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے جتنی ہماری ایل ایس اوز ہیں, مارکیٹ ایسوسیشن ہے, ہوٹل ایسوسیشن ہے, اس کے علاوہ جو بازار کمیٹی ہے, کمیونٹی ہے, ان کے ساتھ سیریز آف ہم نے اویئرنیس سیشنز ان کے ساتھ کیے, ہم نے ان کو سینسٹائز کیا کہ جو ہے نا جب آپ کہیں پھینکتے ہیں, لائک آپ سالڈ علیحدہ پھینکتے ہیں, پیپر علیحدہ پھینکتے ہیں, مطلب آپ سیگریگیٹ کرتے ہیں پہلے ویسٹ کو, بیکاز الٹیمیٹلی اس کو ریسائیکل کرنا از دی الٹیمیٹ ایم. پلاسٹک کا جو ان کی جو ویسٹ ہے وہ جو ہے نا وہ ڈیگریڈیبل نہیں ہے, اس کی لائف ہے 500 to 1000 ایئرز تک جو ہے نا وہ ڈکے نہیں ہوتی. پانی کی لائنیں ہیں, ڈرینیج وغیرہ ہے, اس میں ایک ہمارا اس کو چوک کرنے کے علاوہ ایک ایستھیٹک جو بیوٹی ہے ہماری, جس کو حسن جمالیات کہتے ہیں, وہ بھی ڈیٹوریٹ ہوتی ہے. اب پلاسٹک پہ بین لگنے سے جو ہے نا ہمارا ہاف آف دی برڈنس جو ہے نا وہ اس میں کم ہو جاتا ہے. لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم یہاں پہ ہم نے یہ جو ششکٹ بوٹ ایسوسیشن بنائی ہے, ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ جھیل کے سراؤنڈنگ میں جو ہے بالکل کوئی ایسا پولوشن کو ہم نے بالکل زیرو کرنا ہے. ہمیں ایشو یہ تھا کہ یہ خنجراب سے لے کے یہاں تک جتنا وہ کچرا دریا میں پھینکتے تھے وہ سارا بھی آ جاتا تھا, اور یہ ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا تھا. تو یہاں پہ ہمیں کافی مسائل تھے, لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن نے یہاں پہ ابھی ڈسٹ بینز ڈفرینٹ جگہ میں جو ہے جھیل کے سراؤنڈنگز میں لگائے ہوئے ہیں, ہوٹلز جتنے ہیں ان کے پاس لگائے ہوئے ہیں, اور یہ ویکلی 2 دفعہ یہاں پہ آ کے یہاں سے وہ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہاں سے کچرا لے کے جاتے ہیں. The plastic shopping bags degrade and emit hazardous chemicals if they come in direct contact with hot food and leaves dangerous health impacts on human body. دیکھیں ہمارے پاس ایک تو پلاسٹک شاپنگ بیگس جو ہے نا یہ ہمارے پاس لائک کہ ہم جب گروسری خریدتے ہیں یا ویجیٹیبلس خریدتے ہیں تو یہ شارٹ ٹرم یوز کے لیے ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے آکزو بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس. آکزو بایو ڈیگریڈیبل جو پلاسٹکس ہوتے ہیں تو اس لا کے اندر ہم نے یہ پروویژن دی ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو جی بی کے اندر جو بھی پیکیجنگ آئے گی وہ کسی بھی فارم میں آ جائے, چاہے وہ بسکٹس کی ہوں چاہے وہ چپس کی ہوں, وہ آکزو بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس ہوں گے, نہ کہ عام والے پلاسٹکس ہوں گے جو کہ ڈیگریڈ نہیں ہوتے. اگر ڈیگریڈ نہیں ہوتا اس کو اگر آپ جلاتے ہیں تو اس سے کچھ کیمیکلز, ڈائی آکسین, کچھ گیسز اس طرح کی نکلتی ہیں جو ہائیلی کارسینوجینک ہیں. کارسینوجینک میڈیکل ٹرم میں جو کینسر کوز کرتا ہے, کینسر کا سبب بنتا ہے, وہ کیمیکلز ہیں. The use of plastic bags has become a huge global problem. Different platforms are struggling to address this problem worldwide. The use of polythene bags started in 1980. Now the world produces 500 billion to 1 trillion polythene bags every year.
The use of plastic shopping bags has become very common in the urban areas of Gilgit-Baltistan and also in remote mountain communities, generating high numbers of plastic floating in our water bodies. Flying in the air, in our agriculture fields, in the stomachs of the livestock, and in our drains. Rest of the plastic waste collected and hauled by waste management authorities is being disposed in open dumping sites and burned subsequently. The burning of plastics produces hazardous gases impacting the natural environment and human health. Currently, Gilgit-Baltistan has considerably controlled the usage of plastic bags. GBEPA has plans to create job opportunities with an establishment of an industry to manufacture cloth bags for the local market. इसका जो अल्टरनेट था, एक तो बायोडिग्रेडेबल बैग था जो मार्केट में अवेलेबल था। हमारा कंसेप्ट ये था कि हम क्लॉथ बैग लोकल लेवल पे लोग हम हमारे जो LSOs हैं, हमारी ख़वातीन हैं, वो यहाँ पे बनाएं, क्योंकि ख़वातीन जो हमारी LSOs हैं लोकल लेवल पे ये बैग्स बने, सस्ता कपड़ा मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपए का थैला होता है। फिर मार्केट में आप सेल करें, जैसे किसी शॉप में है वो अगर वो सेल करें तो वो कस्टमर को फ्री में नहीं, अगर 5-10 रुपए में वो सेल करते देते हैं तो बार बार वो यूज़ कर सकता है, बार बार वो लेके आ सकता है मार्केट में। तो इकॉनमी प्लस जो इन्वायरमेंटल दोनों इसमें कंसेप्ट है, हमारे लोगों को लोकल इकॉनमी भी डेवलप हो और हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी नहीं हो। जहाँ तक इस सरगर्मी के हवाले से रोज़गार के पैदा होने का ताल्लुक़ है, उस हवाले से एक MOU साइन किया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुंजा ने कार्डो के साथ। उसके अंदर ये हुआ कि जो फ्यूचर के अंदर जितने भी पहले भी हमने कार्डो से ही बनवाए हैं और कार्डो ने बनवाए हैं, हमारे जितने भी डिसेबल लोग हैं उनसे बनवाए हैं। अब हमने एक बाकायदा MOU साइन किया है, उसके अंदर थ्रू कार्डो जितने हमारे डिसेबल्स हैं, अराउंड कोई 500 डिसेबल हैं डिस्ट्रिक्ट हुंजा के अंदर, तो कार्डो उनसे बनवाएगी और इसका जो पैसा होगा वो उन लोगों को जाएगा जो डिसेबल हैं, और ताकि उनके सिलसिला रोज़गार पैदा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे वोकेशनल सेंटर्स है जो कि ख़वातीन चला रहे होते हैं, अगर हम उनको लाके इस तरह के हम देंगे प्रोजेक्ट्स, वो हमारे लिए बैग्स बनाते जाएंगे और उसको हम अपने मार्केट्स में लेते जाएंगे। जितना हम इसको कॉमन करेंगे, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल बैग्स है, कपड़े के बैग्स है, उतना ही लोग उससे अवेयर होंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। Carpet sak purna plastic की बंद खेत का सक केम खिलता शुरू है, चीज़ केम खिलता foreigner zichte Schweden sagt, ja spela kan plastik vishneke met. Ja shat ki sakri plastik pasan nas twa sak skiem karpit plastik di ja plastik nekem drkhubeg shkholi yodi. Ni vitsaim khiltaite gami baf. सिमिलर इसी तरह के बिजनेस सेंटर्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी नेक्स्ट अगले जो फेजेस हैं हमारे उसमें ये आते जाएंगे। The important part of the drive is to raise awareness of the local communities, institutions, shopkeepers, hoteliers, and the authorities. GBEPA has put resources in with the district administration to get rid of the plastic menace through awareness walks, awareness session with LSOs and local communities, the shopkeepers, and the journalist community. GBEPA has taken the responsibility for a plastic pollution-free Gilgit-Baltistan. The government of Pakistan has made a commitment to free the country from the usage of polythene bags through special arrangements. This was the biggest challenge of the year 2018 and 2019. For popularizing the campaign, Say No to Plastic Bags across Gilgit-Baltistan. Hunza, being a hub for tourism, was selected purposefully due to its unique natural beauty and community awareness about the cleanliness of the environment. क्योंकि प्लास्टिक ने जो नुकसान हमारे दुनिया को पहुंचाए हैं, खुसूसन समंदरों में इस वक्त जो समुद्री हयात हो या इंसानी हयात हो, जिस तरह से उसने मुतासिर की है, उसका वाहिद हल यही है कि हम इस
प्लास्टिक बैग को जो है अपने इलाकों से ज़रा दूर रखें। Gilgit-Baltistan, once considered as pollution-free or under minimum pressure, is now on the verge of entering into the list of polluted areas. The main factors responsible are rapid urbanization, high influx of domestic tourists, shifting from subsistence to consumer society. जैसे ही हमारे रेगुलेशंस और हमारा लॉ अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट शुरू होगी। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि बाहर से प्लास्टिक शॉपिंग बैग आना ही बंद होंगे। जब आना बंद होंगे तो मार्केट में प्लास्टिक शॉपिंग बैग अवेलेबल नहीं होंगे। हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्लॉथ बैग्स एंड पेपर बैग्स अब मार्केट में अवेलेबल होंगे। जब ये चीज़ें अवेलेबल होंगी और एक वैक्यूम क्रिएट होगा प्लास्टिक शॉपिंग बैग का, तो ऑटोमेटिकली ये क्लॉथ एंड पेपर बैग आके उस वैक्यूम को फिल करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई यूज़ करेगा या सेल करेगा तो उसके अंदर, उस लॉ के अंदर पेनल्टीज़ और चार्जेस डिफाइंड है, उसके मुताबिक हम इन्फोर्समेंट करेंगे। एज ए सिटीज़न हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि एक कानून जो अब इम्प्लीमेंट हुआ है गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे सबसे पहले हम उस कानून को एक्सेप्ट करें और उसकी एक्सेप्टेंस के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ काम करें। The project so far is a huge success because 90% of polythene bags have been cleared away from the local market by the local authority with the help of district administration and waste management, Hunza. Plastic bag pollution is a global issue nowadays that should be tackled locally by all through local solutions. The government of Gilgit-Baltistan has taken this issue very seriously and is committed to get rid of this menace through awareness in people. It has become compulsory for the entire household members to keep cloth bags so that every time they go for shopping, they can shop in the given cloth bags and show that they are equally responsible citizens of Pakistan. Knowing all the bad effects of the plastic pollution and its wide use, it has now become the responsibility of each and every citizen not to use plastic bags in their everyday lives. Our Mother Earth has no alternative, and our unique area of Gilgit-Baltistan has no match in the world. The natural resources of Gilgit-Baltistan are very crucial for the people living in and downstream. We all together need to save the environment and save the future of our planet.